If you are pregnant or planning for a child, then congratulations for this wonderful journey and welcome to GARBHSANSKARA from Technology. Hi, I'm Dr. Vandana Jodhani, MD Homeopath, and I've been working since 15 years in field of homeopathy. और मैंने 2000 से ज्यादा फीमेल पेशेंट को एंटीनेटल केयर के लिए गाइड किया है और क्लिनिकल रिसर्च में ये पाया गया है कि ये जो प्रेगनेंसी है वो सिर्फ 9 मंथ्स की जर्नी नहीं है. इट इज अ वेरी क्रूशियल स्टेज फॉर जेनेटिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. So I have rem out certain factors in form of गर्भ संस्कार टेक्नोलॉजी. सी जब भी हम ये वर्ड प्रोनाउंस करते हैं गर्भ संस्कारा, मेनी ऑफ अस डोंट नो व्हाट इज इट. और कुछ लोगों को पता है कि ये क्या है बट दे डोंट नो हाउ टू यूज हर ओन वोम एज ए टेक्नोलॉजी टू डिजाइन हर ड्रीम चाइल्ड एंड डेवलप इनटू फुल फ्लेश ह्यूमन बीइंग. सी यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है ह्यूमन बीइंग, नॉट अ बेबी और अ चाइल्ड. Because being a human, we all are so special in this evolution. और हम सबकी एक स्पेसिफिक जर्नी है यहाँ पे. और ये जर्नी मदर्स वूम से स्टार्ट होती है. एनी आइडिया व्हाई वी आर सो स्पेशल इन दिस इवोल्यूशन? बिकॉज वी ऑल आर गिफ्टेड विद द वंडरफुल नर्वस सिस्टम दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. और ये जो सिस्टम हमें दी गई है उसकी वजह से हम पास्ट को मेमोराइज कर सकते हैं और फ्यूचर को विजुलाइज कर सकते हैं. और यही वो फैकल्टीज है जो हमें दूसरे स्पीसीज से कुछ अलग बना दिया है, कुछ एडवांस बना दिया है. और ऑन अदर पार्ट यही वो फैकल्टी है जो काफी सारे लोगों का दुख, परेशानी, डिजीज और सफरिंग का रीजन भी है. सो अपार्ट फ्रॉम हैविंग दिस बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम द नेचर, व्हाई वी आर सफरिंग? बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू यूज nature's formula of being human. Now let's understand what is the nature's formula of being human with small example. So you can see one picture on the screen that a tiny seed has all the genetic informations that how to develop into full-fledged tree. But the character of the tree is always determined by the quality of seed, right? मदर नेचर के पास वो सारी विजडम एंड इंटेलिजेंस है कि वो एक छोटे से सीड को एक फुल फ्लेज ट्री में कन्वर्ट कर सके. बट कौन सा ट्री बनने वाला है, कौन सा ट्री मैनिफेस्ट होने वाला है, इट्स ऑलवेज डिपेंड ऑन द कैरेक्टर ऑफ सीड्स. इफ यू सो मैंगो कैनल यू विल हैव अ मैंगो ट्री, एंड इफ यू सो नीम सीड्स यू विल हैव ए नीम ट्री. एक मैथमेटिक्स की तरह एक बिल्कुल सिंपल है. 2 + 2 = 4, राइट? So similarly, Garbh Sanskara is a scientific and spiritual knowledge designed for pregnant mother to educate the mind of the unborn child during pregnancy. से जब भी हम ये एजुकेशन वर्ड को सुनते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज चलती है कि फ्यू इयर्स आफ्टर डिलीवरी एक बच्चा स्कूल में तो जाने ही वाला है, वहां पे वो एजुकेशन लेने ही वाला है. देन व्हाई टू एजुकेट चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ऑलरेडी स्कूलिंग का इतना बर्डन है तो चाइल्ड को इन यूटेरो ये एजुकेशन देने की क्या जरूरत है? इवन मैंने खुद देखा है कि काफी सारे पेशेंट्स जो बोलते हैं कि मुझे गर्भ संस्कार करना है, उनके खुद के फैमिली मेंबर्स उनको कंट्रोवर्सी रिप्लाई करते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, हमने तो नहीं किया था, फिर भी आप लोग हो, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड विथ 3 डिफरेंट व्यूज कि ये क्यों जरूरी है. फर्स्ट वी विल गो थ्रू द लाइव एग्जाम्पल्स. So you can see one picture on the screen. He's a Zakir Hussain. और in one interview उनके फादर ने ये बताया था कि आई एम श्योर दैट जाकिर heard the tabla and knew what it was in his mother's womb. In fact, he also mentioned that I had a rhythm in my subconscious when I was 3 years old. Is some kind of homework was already done, and I recognized like Arjuna talking to Abhimanyu when he was in his mother's womb. Let's move to the next one. He is a Shivamani, Indian music composer, a percussionist. He also mentioned that I started my practice in my mother's womb. In fact, her heartbeat was my first click track. और उन्होंने ये भी बताया है कि I did not go to any music school to learn drums. Now, next one. So you can see 2 different pictures on the screen. एक पिक्चर है मदर रेचल एंड अनदर वन इज बेबी एली.
When it was questioned about neurological development in pediatric age group, baby Ellie was able to have a proper grasp and that grip at the age of 20 months. And retrospective research show that her parents, Rachel and Zach Farmer, are enthusiastic climbers themselves. And in fact, Rachel climbed while she was pregnant with Ellie. So these are the few live examples that suggested that child can learn inside mother's womb. Or else mother's womb is a powerful place to learn anything, right? अब देखते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च क्या कहता है. See, Dr. Rene Vendiker, he mentioned that your baby's brain develops in response to what they experience. And he is the father of preborn classroom. वो कैलिफोर्निया में अनबॉर्न बेबीज को म्यूजिक और अदर एक्सरसाइज से उसकी ब्रेन को स्टिमुलेट करने की एक्सरसाइज देते हैं. Now next one. See about Dr. D.H. Stott. He has done a long-term study over 1,300 mothers, and he mentioned that a woman locked in a stormy marriage, it runs 237% greater risk of bearing psychologically and physically damaged child than women in a secure and nurturing relationship. And of course, he's an ex-professor of psychology and director center for educational disability, University of Garbh. Now let's explore in the lens of Vedas. हमारे जो एंशियंट वेदास है उसमें क्लासिकल एग्जाम्पल दिया गया है, राइट? द स्टोरी ऑफ अभिमन्यु. And it is mentioned that Abhimanyu has learned that how to penetrate the difficult Chakravyuh, right? See, when Arjuna was describing the entire strategy that how to penetrate this difficult Chakravyuh, the baby Abhimanyu was listening in his mother's womb. But the last part, that how to come out from the Chakravyuh, he was not able to grasp this knowledge because at that time, Mother Subhadra was sleeping, right? In that battle, he died. Apart from these, there are a lot of examples in ancient Veda that he denoted that how GARBHSANSKARA is important during pregnancy. That is about the story of Prahlad, story of Madalsa, story of Mother Kaikasi, story of Hanuman. ये सारी स्टोरीज ये दिखाती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर को नॉलेज दिया जाता है हाउ इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड, राइट? तो जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि स्कूल और कॉलेज जाना है और वहां पे डिफरेंट सोर्सेज से नॉलेज को एक्सपीरियंस करना है या कलेक्ट करना है, राइट? बट लेट मी क्लियर विथ यू दैट मदर्स वूम इज अ फर्स्ट स्कूल ऑफ हर चाइल्ड. मदर अपनी 5 सेंसेस से जो भी कुछ एक्सपीरियंस करती है वो चाइल्ड वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करता है इनसाइड मदर्स वूम. So child will never wait for birth to learn anything because mother's womb is a directly 3D printer for her child. Even Chanakya mentioned in history that this 5 thing decides from mother's womb: life, knowledge, pattern of work, wealth and death. If you ever observe, our entire life is revolving about number 2 knowledge, number 3 pattern of work and number 4 wealth. That how much knowledge one should have, what kind of work one should do, and how much amount of money one should have to live the peaceful in this planet, right? See, one of the important research which is done by Bruce Lipton, he is a biologist, and he mentioned that your children's genes reflect only their potential, not their destiny. And it is up to you to provide the environment that allows them to develop to their highest potential. So, ये सिर्फ 9 months की जर्नी नहीं है. आप कुछ करते हो या नहीं करते हो, बच्चा अपने आप अंदर कुछ सीख के ही आता है, राइट? सो यहां तक इतना तो हमें समझ में आता है कि दिस जर्नी ऑफ 9 months इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड. But let's understand how mother she can use her own womb as a technology. And let's understand with this small example. So you can see one picture on the screen.
If a potter wants to design a pot, then there will be same material, same technology, that is spinning wheel. But if he wants to design or make any change in design, what do you think? क्या वो ड्यूरिंग प्रोसेस वो चेंज कर सकते हैं या आफ्टर प्रोसेस? व्हाट डू यू थिंक? इफ ही वांट्स टू मेक एनी चेंज इन डिजाइन, ऑब्वियसली आफ्टर प्रोसेस ही कांट डू एनीथिंग. सो कुछ भी जो चेंज करना रहता है वो ड्यूरिंग प्रोसेस करना पड़ता है, बिकॉज मोल्डिंग इज एन आर्ट एंड प्रोसेस. सो सिमिलरली जो गर्भ संस्कारा है, इट इज अ मोल्डिंग अ चाइल्ड ड्यूरिंग 9 months ऑफ प्रेगनेंसी. सी प्रेगनेंसी इटसेल्फ एक नेचर फिनोमिना है, राइट? इटसेल्फ एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम से वो नेचुरल फिनोमिना है. But Garbha Sanskara provides tools and technique that how to mold your child during these 9 months of his or her life. That is all about Garbha Sanskara. See, here we need to understand one more thing, that if you ever observe human body, अगर आपने कभी भी शांति से ह्यूमन बॉडी को ऑब्जर्व किया हो, then each and every second human body knows that how to maintain balance, a temperature, a pressure, or whatever food or water you have, it turns into energy, right? In a fraction of second, human body act as a multitasking device. On other hand, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, it's already in built design for creation. A female reproductive system, it is already that wisdom and intelligence that how to develop this full-fledged human body that act as a same multitasking device, right? और इट इज नोन एज ए ऑटोमेशन. और ये जो ऑटोमेशन है, इट्स completely under influence of mother's will, wish, emotions, and desires. So here, Garbha Sanskara provides you tools and techniques that how to use her own womb to design her dream child in terms of physically and mentally healthy, beautiful, and peace-loving quality. Now, see, as per this discussion, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू डूइंग द गर्भ संस्कारा, राइट? और यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हमें पेशेंट की तरफ से भी सुनने को मिलता है कि मैडम व्हाट इज द राइट टाइम. और हमने देखा है कि काफी सारे फैमिलीज में 3 months तक वो प्रेगनेंसी को डिक्लेयर नहीं करते हैं. इट्स अ मिथ अबाउट प्रोटेक्शन. उन लोगों को इनसिक्योरिटी रहती है, तो वो दे जनरली डोंट डिक्लेयर प्रेगनेंसी अंटिल 3rd month, राइट? बट आपने कभी भी ऑब्जर्व किया हो, वो लेबरर और ग्राउंड वर्क के साथ जो भी लोग जुड़े हैं, दे ऑल्सो हैव ए नॉर्मल एंड हेल्थी प्रेगनेंसी एंड दे ऑल्सो कैन डिलीवर अ नॉर्मल चाइल्ड. सो यहाँ पे हमें ये समझने की जरूरत है कि प्रेगनेंसी इज ए नेचर्स फिनोमिना एंड इट इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय नेचर. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द स्मॉल एग्जाम्पल कि गर्भ संस्कार कब करना चाहिए. सी, इफ यू एवर ऑब्जर्व अबाउट अर इंटेलिजेंट फार्मर, आपने देखा होगा कि एक फार्मर जब अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट करता है तो उसके पहले बहुत सारी प्रिपरेशंस करते हैं, राइट? जैसे कि प्लाविंग, वाटरिंग और यूजिंग प्रायर फर्टिलाइजर, राइट? सी, इफ दे मिस एनी वन ऑफ दिस फैक्टर, they used to suffer till harvesting of crop, right? So similarly, we need to understand certain factors before planning a child. Now for that, let's understand this. See, there is a ancient versus modern concept of pregnancy. Whatever we told as a preconception, during pregnancy, and preparation for delivery and lactation is similar to ancient concept of Garbha Sanskara, that is a Garbhadan, Usavan Sanskar, and Simantoi Sanskar. This Garbha Sanskara includes these 3 stages. And Garbh Sanskara is the first sanskara of Sula Sanskara in Sanatan Dharma, that is eternal laws for full-fledged human being. So, Garbh Sanskara always start at the stage of Garbhadan, that is a preconception stage, that is 3 months to 1 year prior before pregnancy, before you conceive. See, here we need to understand that sperm and ovum are the beach for a child. And this stage is related with the Bij Shuddhi. Bij means sperm and ovum, which is given by the parents to the child.
So half of the genetic materials provided by the father and half of the genetic materials provided by the mother during this stage, right? So here this stage is all about बीज शुद्धि. और बीज शुद्धि को बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज माना गया है बिकॉज पैटर्नल और मैटरनल साइड से जो भी डिजीज पैटर्न और जो भी डिफेक्टिव जेनेटिक पैटर्न्स चल रहे हैं वो ये स्टेज में वो फिल्टर आउट हो जाते हैं. सो इट इज अ वेरी क्रुशियल एंड इंपॉर्टेंट स्टेज बिफोर प्लानिंग. सी यहाँ पे एक और चीज समझने की जरूरत है. सी टुडे टाइम इज डिफरेंटली चेंज. ऑन टॉप ऑफ रोल ऑफ फीमेल इज ऑल्सो चेंज, राइट? सो जब भी हम प्रेगनेंसी और कंसेप्शन की बात करते हैं तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं. और वहां पे जब हम हेल्थ की बात करते हैं स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो पेशेंट और जो प्रेग्नेंट मदर रहते हैं उनको सिर्फ इतना ही समझ में आता है कि हैविंग प्रॉपर डाइट, टेकिंग रेस्ट एंड डूइंग सम एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अ हेल्दी प्रेगनेंसी. बट नो. See, we as a doctor find out some genetic and environmental factors that act as a stress for pregnant mother and that is responsible for genetic development of child. Let's understand this. See, these are the environmental and psychological stress factor that lack of sleep, improper nutrition, change of weather, overexertion, financial crisis, work pressure, loss of loved one, toxic relationship, and history of repeated abortion. These are the important factors that we need to address during pregnancy. और जब भी हम प्रेगनेंसी केयर की बात करते हैं तो सबके दिमाग में सिर्फ एक डाइट और अच्छी तरीके से नींद लेना है, अच्छा खाना खाना है, सिर्फ उतने ही फैक्टर्स को वो एड्रेस करते हैं. बट दीज आर दी वेरी वेरी क्रूशियल फैक्टर्स और वो सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं. एंड व्हाई दीज आर द इम्पोर्टेंट? बिकॉज वेन एवर वी कॉल समथिंग एज अ स्ट्रेस, राइट, इट स्टिमुलेट द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ये हमारी नर्वस सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जो फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म से काम करता है. सी, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स इज नथिंग बट इट इज अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स इन विच ब्रेन गिव्स कमांड टू द एड्रिनल ग्लैंड. एक किडनी पे एक छोटी छोटी ग्लैंड्स रहते हैं, वहां पे वो स्टिमुलेट होता है, वहां से कुछ सेट्स ऑफ केमिकल्स बॉडी में रिलीज होते हैं, दैट्स नोन एज अ स्ट्रेस हॉर्मोन्स. और अंडर दो स्ट्रेस हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में जो दूसरे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं. जैसे कि उसकी वजह से ज्यादा ग्लूकोज बनना, हार्ट रेट कम हो जाना या फास्ट ब्रीदिंग हो जाना, ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाना, ये एसिडिटी होना, ये सारे सिम्टम्स वो सेट्स ऑफ केमिकल की वजह से होता है. एंड अंडर दिस स्ट्रेस रिस्पॉन्स there is a further replicative stress for the child because of low oxygen, and it's known as a metabolic stress and it's lead to further DNA damage. So most of the time हम सिर्फ physical factors को ही address करते हैं और psychological factors हमसे ignore हो जाते हैं. But these are the hidden and crucial factor for a child's development. We should not forget this. Even Dr. Joe Dispenza, he's a famous chiropractor from USA. He's mentioned that pregnancy is a one and only chance for mother to give the ultimate health to her child. And it is the emotions that turn genes expression on and off. And human emotions can't be scanned in any man-made machine. I repeat, human emotions cannot be scanned in any man-made machines. Right? So it's my humble request in this panel. अगर आप मुझे देख रहे हो, आप फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, आपके सराउंडिंग में अगर कोई भी फीमेल है, वेदर शी इज योर डॉटर और डॉटर इन लॉ, सिस्टर और सिस्टर इन लॉ, whoever she is, your friends, your colleague, just try to provide that supportive environment, that care, that nurturing, and at least that secure environment to that female for healthy development of child. I hope you can understand this. So GARBHSANSKARA womb technology provides some tools and techniques, and there are some objectives for mother. For mother, GARBHSANSKARA provides a prenatal education to understand what is healthy pregnancy. See, whenever we talk about health, health is not a single term. It should cover all the four dimensions: mental, physical, intellectual, and spiritual one. The next one is the programming of baby. It is a step-by-step guidance and mind and body relaxation for healthy pregnancy.
And last but not the least, that is a preparation for normal delivery and lactation. And for child, it is a holistic development. All four dimensions of the health, that is physical, mental, intellectual, and spiritual. See, we have seen in pediatric case taking that child's genetic pattern is completely dependent during 9 months of pregnancy. So we have seen that during pregnancy, whatever the stress factors child exposure during that 9 months, it reflect into different chronic diseases. It could be chronic asthma, allergy, different autoimmune disease, or any mental disorder, behavioral disorder, autism, hyperactive disorder, whatever you can give the name in terms of chronic disease, the root cause of disease lies during stage of pregnancy. So if mother adapt GARBHSANSKARA home technology during these 9 months of pregnancy, child will have a definitely a good physical health. It will reflect in all these four dimensions of health. See, physically, mother can provide the healthy immunoglobulins through her lactation for her child. With the help of GARBHSANSKARA, child will have a good focus and concentration and different learning abilities. Mentally, child will be calm and more emotionally stable. And spiritually, she can nurture her child a well-mannered, cultured, and peace-loving quality. So, GARBHSANSKARA is a process about transformation, and it gives you holistic development at all the four levels, that is mental, physical, intellectual, and spiritual one. So it is a step-by-step guidance, and the first one is the designing your child. In your mental world, in your mental space, the first step is you have to design your child. The next one is the physical development. With the help of different breathing exercise and physical exercise, mother can give the complete physical health to her child during this pregnancy stage. Now, the third one is a mental development. Mental development, by using the five sense organ to process of informations and process of visualization, she can nurture a well, emotionally stable and calm and that peace-loving child. And the intellectual development, see, human cells is programmed with the automation. So subconscious intelligence runs through the brain and spinal cord along with the placental circulation. Mother can give the highly intellectual ability to her child. There are some different exercise through which mother can stimulate different parts of neuron and brain during this stage of pregnancy. And the spiritual development child, by purity of inner consciousness, by purifying thoughts, feelings, and actions, and as well as implanting all the positive characteristic to the personality of your little one. So this is all about the GARBHSANSKARA home technology. See, most of the time, mother used to pass out all the 9 months by just waiting for delivery. बट यही वो स्टेज है जहां पे आप अपने बच्चे के साथ एक इनडिविजिबल बॉन्ड शेयर करते हो. एंड दिस इज द ओनली टाइम फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ योर चाइल्ड and transformation of yourself. So join with me for one-to-one coaching and we'll meet you soon. Till that, be blessed with your divine health.